Yes, please start. Please start. Now we are live. Okay. Okay, very good evening and warm welcome to all eminent doctors. Thank you so much for joining for us today's webinar. Our endeavor is to spread awareness about rabies, which is fatal but can be avoided once appropriately vaccinated. This is an initiative from Cadila through its innovation to serve the society and humankind. The topic of the webinar is dosage reduction strategy in rabies management role of novel vaccine. Dear doctor, rabies is the world's first novel three-dose anti-rabies vaccine, and with great pride, we would like to inform that rabies has successfully completed 1 year of launch with more than 40,000 animal bite victims being vaccinated, 100% compliance was recovered, and no case of ADRs was registered. With this, it's my honor to introduce you to the speaker of today's webinar. Our speaker is Dr. Sudarshan Jha, who is leading GP in Araria city. And he is practicing more than 20 years. In fact, he is a good practice in Araria. Thank you, Shivananji. Thank you. Thanks a lot. I would like to hand over the session, Dr. Sudarshan Jha. Please. Okay, thanks a lot. Yes. First of all, I would like to welcome all the delegates who are participating this program, rabies vaccination. The topic is rabies vaccination, one of the very important aspects in our day-to-day clinical practices. Dear doctors and the other technical supporting members, first of all, I would like to welcome you all. Rabies, one of the very important and a very challenging disease in our day-to-day practice. It is a zoonotic disease. Do you know why it is called zoonotic disease? Zoonotic disease means a disease which is spread from the bite of any animal, from animal to human beings. Those diseases which spread from the animals to the human are called zoonotic disease. As you know, rabies is 100% fatal. On one hand, it is 100% fatal, and on the other hand, it is 100% vaccine preventable disease. Now let us begin with the topic. Rabies disease, animal bite incidence in India, epidemiology, evaluation of rabies vaccine, challenges, unmet needs, introducing therapies, novel technology, clinical study phase 2, clinical study phase 3, and takeaway. Rabies is a zoonotic disease, as it was told by me before a few minutes, caused by rabies virus encoded by 5 structural proteins. Those proteins are G protein, N protein, P protein, M protein, L protein, one envelope, and RNA as a genetic material. These proteins are encoding the RNA, which is genetic material. The G protein, one of the very important protein. G protein is the major antigen in the formation of neutralizing antibody against rabies. It would be very heartening for us that globally we encountered 59,000 rabies deaths per year. And in India, it is 20,000 rabies deaths per year, 91% death in rural areas. Rabies is 100% fatal, but 100% vaccine preventable disease. Evaluation of rabies vaccines.
First of all, it was evaluated in 1885, live accentuated vaccine, spinal cord. The source was spinal cord, non-standardized dried preparation, up to 31 injections of increasing immunogenicity. Then inactivated vaccine, brain up to 10%. It was the year 1911. Minimal neural content, liquid preparation, 14 injections, each 0.5 ml daily. Now, cell culture inactivated vaccine, cell culture greater than 2.5 international unit, 1976, standardized immunogenicity lyophilized, 5 injection, 0.5 to 1 ml. The dosage regimen is 0, 3, 7, 14, and 28. Current challenges: inconsistency in potency, stability, short supply, adverse event. Current challenges: non-compliance is a major source. Non-compliance is a major source. Decreased compliance beyond 3 injections. We have seen in our clinical practice that many patients have taken 1, 2, or 3 injections and doesn't return back for the full course of anti-rabies vaccines. This is the non-compliance. Introducing rabies, 5 vaccine with 3 doses intramuscular regimen 037. First vaccine with 3 dose intramuscular regimen 0, 3, and 7 days. Means within a week the vaccination is completed. Earlier it was in 5 doses 0, 3, 7, 14, and 28. First protein subunit vaccine prepared by VLP platform technology, better compliance due to easy to flow regimen and less visit because it is 3 dose only. Convenience, ready to use. म्यूट कर लेते हैं इसको अनम्यूट कर लेते हैं तब होगा नहीं उसको लोग क्लियर कर दिए सुदर्शन सर, आई रिक्वेस्ट यू टू आईफोन से आप लॉग आउट कर दीजिए और यहाँ पे जो जूम का म्यूट है ना उसको माइक को अनम्यूट कर दीजिए सर। आपका भी म्यूट है। हाँ हो गया सर, एकदम परफेक्ट है सर, अभी सही आवाज एकदम। Okay, thank you. यस सर। Now we are going to introduce rabies. I would like to explain the whole course of rabies vaccine. First, protein subunit vaccine prepared by virus-like protein platform technology. First vaccine with 3 dose intramuscular regimen 0, 3, and 7. Earlier it was 5 doses vaccine which was given 0, 3, 7, 14, and 28. Better compliance due to easy to flow regimen and less visit. Convenience, ready to use, no need to reconstitute prior to its administration. Next. Next. Clinical phase 2 study design 0 to 3 2 doses 10 microgram 0 to 3 n equal to 50 10 microgram 037 n equal to 50 50 microgram 0 to 3 n equal to 50 50 microgram 037 n equal to 50. The graph is showing the same.
Next. Safety and immunogenicity of a novel 3-dose recombinant nanoparticle rabies G protein vaccine administered as simulated post-exposure immunization, a randomized comparator controlled multi-center phase 3 clinical study. To evaluate immunogenicity and safety of rabies G protein vaccine administered as a simulated post-exposure immunization in healthy volunteers, randomized comparative controlled multicentric study, total subject 800, randomization 2:1, Travis 037 regimen, 53 subject, 533 subjects, 037 14 28 days regimen, 267 subject. Remipur reference. Next. A study design and objectives. To demonstrate non-inferiority of the test vaccine to the comparator vaccine. Primary vaccine, subjects with seroprotection at 14 days post first dose, seroprotection RNA titer is greater than 0.5 international unit per ml. Secondary objectives, subjects with seroprotection at day 42 post first dose of test vaccine safely by monitoring subjects with adverse event. Seroprotection, the protection obtained by vaccination. Next. The results were consistent across different age group and genders. Observed difference 1.52%, 95% clearance 0.18 to 4.17 with the pre-specified margin of 4%. Non-inferiority of seroprotection primary and end point day 14 and 42 were met. Test and comparator are identical in seroprotection rate both on day 14 and 42. A study conclusion. Rabies was non-inferior to reference vaccine. The second one is less adverse effect compared to reference vaccine. Third one, which is very important, novel 3-dose rabies was found to be safe and immunogenic and was comparable to 5-dose of World Health Organization pre-qualified vaccines. Pharma Innovation of the Year by the Economic Times. Cadila Pharma has got award for the invention of this 3-dose novel rabies vaccine. The Pharma Innovation of the Year by the Economic Times. The Golden Globe Tiger Award, Malaysia for Innovative Product of the Year. Thank you. Thank you, Anyone sir. would like to ask any question regarding Yes, rabies? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir, for this wonderful session. The slides were very clear. Sir, मुझे आपसे पूछना था कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है थेरेपिस्ट को प्रिस्क्राइब करने का, लाइक पेशेंट्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है कि पहले 5 डोज होती थी तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 मंथ एंड वो कॉस्ट भी पड़ता था कि 5 बार डॉक्टर को विजिट करना पड़ता था. सो आपका एक्सपीरियंस प्लीज शेयर विद अस फॉर थेरेपिस्ट. देखिए 2-3 बातें होती है कि चूंकि जहां हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ये रूरल एरियाज है मैम, तो मोस्टली लोग इससे इतने अवेयर नहीं है. वो 1 2 3 डोज जाते जाते जो है ना वो छोड़ देते हैं, फिर से वो आते नहीं है. तो पहली बात तो ये है कि 1 महीने का है, उनको लगता है कि अगर होना होता 5-7 दिन 10
सुदर्शन सर, आपकी आवाज चली गई है, आप यू नॉट ऑडिबल। Am I not audible? नो सर, बीच में आपकी आवाज चली गई, अभी आई है। हाँ, अभी सही, परफेक्टली फाइन। हाँ सर, तो आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था ये कि जो अर्लियर जो 5 डोजेस था वैक्सीन का, तो हम लोग जो मरीज को देते थे, तो मरीज लोग जो है ना टर्न अप नहीं हो पाते थे। 2-3 डोज लेते लेते उनको लगता था मैं ठीक हो गया, झूठ मूठ का डॉक्टर ज्यादा डोज लगा रहा है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो वो 2-3 डोज में ही छोड़ देते थे। तो इससे नॉन कंप्लायंस होता था, नंबर 1। नंबर 2 बात कि मरीज लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती थी कि बार बार उनको हॉस्पिटल विजिट करना होता था, क्योंकि आज के डेट में प्राइवेट से ज्यादा जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारे जगह रेबीज की वैक्सीन अवेलेबल है और वो लोग देते हैं। तो काफी सारी परेशानियां हॉस्पिटल में उन्हें झेलनी पड़ती थी कि भाई डोज लेने के लिए काफी टाइम को वेट करना पड़ता था। ये 2-3 बातें जो है मुझे लगता है कि ये इससे परेशानी से थोड़ा सा निजात मिलेगा मरीज को। नंबर 2 है कि 1 सप्ताह में ही हम लोग वैक्सीन का कोर्स फिनिश कर पा रहे हैं, ऐसे हम लोग 1 महीने में फिनिश कर पा रहे थे। तो कंप्लायंस बहुत बढ़ जा रहा है मैडम इस सेंस में। बाकी थेरेपीज का अब तक तो मैं इस्तेमाल नहीं किया हूं, जो रियली जो मैं बोलना चाहता हूं, बट ये कमिंग डेज के लिए, इम्पेंडिंग डेज के लिए हम लोग के लिए ये बहुत बेटर है, जो मरीज को कन्विंस भी कर पाएंगे हम लोग और इनकी कंप्लायंस भी बढ़ेगी। आ गया। हाँ, आ गया। हेलो है। हेलो, one more question please sir. Yeah. Question, what are the advantage? आपकी आवाज नहीं आ रही है नसीम जी। डॉक्टर नसीम सर हैं? हाँ, आवाज नहीं आ रही है उनकी। आवाज नहीं आ रही है। नसीम सर थोड़ा लाउडली बोलिए ना। नहीं, म्यूट हो नहीं, गया उनकी लगता है। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा अनम्यूट लाउडली कीजिए नसीम सर, अनम्यूट हाँ। कीजिए। अनम्यूट कर हाँ, लीजिए। म्यूट। हेलो हेलो, म्यूट कर। हाँ हाँ अब सर, ठीक आपकी है। आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है अब। डॉक्टर नसीम, कुछ शायद नेटवर्क का इशू है, अदरवाइज बीच में उनकी आवाज आ रही थी। हाँ बीच में आ रही थी। अभी म्यूट पे है वो। ठीक है। हेलो डॉक्टर नसीम, जी। हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है नसीम, डॉक्टर आपकी नसीम, आवाज तो आपकी आ रही है आवाज डॉक्टर नसीम। बोलिए सर। जी। आप मुझे मेरा सुन पा रहे हैं? क्वेश्चन था वाटर। हेलो हाँ जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन था बोलिए। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ 3 डोजेज एंटी रेबीज वैक्सीन? फर्स्ट एडवांटेज, the compliance. Earlier it was 5-dose regimen which takes almost a month. Now 1 week is enough to complete the course of vaccine. The compliance, main benefit is compliance, and the second one is earlier those vaccines which are coming in the market or in the government hospitals should be reconstituted prior for its injection, but Travis is already reconstituted and it should not need to reconstitute. It is ready to use. These are the 2 main advantages of Travis. Compliance as well as the easy to vaccinate. Sudarshan sir, there are few questions. I have just joined because I was in a different webinar. So sir, 1-2 क्वेश्चन आए हैं आपके लिए। तो कुछ डॉक्टर्स ने पूछा है कि थ्रेबिस क्या है, so that answer I can give कि थ्रेबिस is a novel 3-dose anti-rabies vaccine. दूसरा सर, एक क्वेश्चन है कि I'll just read it out. हाँ बोलिए। Any like if you talk about the 3 dose, do you think that it is sufficient
Well, all the companies are having 5 doses. Sir, ये question 3 doses. Yeah. Already phase 2 and phase 3 trial has been conducted by the Cadila Pharma, which clearly shows that Right. the immunogenicity and the safety profile, the immune response, it was seen almost equal as compared to the 5-dose vaccine. Right, sir. Naseem sir, I request you to mute your mic. Technical support, please mute sir mic because काफी sound 3 dose is adequate, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please continue. So many studies is present in the market. Mute करने बोल रहा है. That first dose, 1 dose Therapies vaccine, so much immunogenicity you can't expect. Right, That's sir. why 3 dose is much enough. Right, sir. Any question? Any more question? Sir, one question regarding your experience. I hope you must have shared, but again, there's a question that what do you think? How safe is this vaccine? And if you have passed the benefits of rabies to your animal bite victim, what are the feedback from them? अगर कोई feedback है, that also आप group के साथ share कर सकते हैं, sir. नहीं, ऐसे तो हम लोग तो देखते हैं ना कि बुक्स में तो लिखते हैं कि कुछ थोड़े बहुत एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले हैं वैक्सीन का, बट प्रैक्टिकली मुझे आज तक तो नहीं मिले. मैं करीब 5-6 साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम किया हुआ हूँ. वहां पर तो रोज आते थे वैक्सीन के लेने के लिए डॉग बाइट वाले. यूजुअली डॉग बाइट वाले ही आते थे यहाँ पर. लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेबीज जो है ना सिर्फ डॉग बाइट से नहीं होता है. कोई भी कैनाइन एनिमल कोई भी हो, डॉग हो, कैट हो, रैकून्स हो, ढेर सारे हैं. कैनाइन एनिमल्स के काटने से रेबीज का खतरा रहता है, पहला बात. दूसरा बात, इसके साइड इफेक्ट्स में यूजुअली देखा गया है कि एक इम्यून रिलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया समटाइम्स होते हैं, बट आई हैव नॉट गॉट टिल टुडे. ओके सर, बट बुक्स हैव सम डिफरेंसेस. और सर अगर आप बात करते हैं Sudarshan sir, one question here. हाँ Sir, हाँ बोलिए. what types of animal bite cases you come across apart from dog bite, sir? Number of animal bites I have seen in my clinical practice. How can I enumerate those cases? Lots of cases I have seen. So apart from dog bite, sir, maybe the question is apart from dog bite, कोई और animal bite victim जैसे मतलब cat bite या cat bite. हाँ, yeah, I have seen cat bite. Right, sir. Cat bite. Actually, शिवानंद जी क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं. Yes, sir. रेबीज में एक बात नोटिस करनी होती है हम लोगों को. सीएनएस से जितने दूर बाइट है ना, उतना मरीज के पास टाइम रहता है. हम लोग जो पढ़ते हैं ना कि इंक्यूबेशन पीरियड, कि जब बाइट हुआ और जब पहला साइन या सिम्टम पेशेंट में अपीयर हुआ, दैट विल टेक मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्यूबेशन पीरियड. It is appropriately 10 days, but it is not absolutely 10 days. It may be 10 days to many years, up to many years. तो हम लोग ये देखते हैं कि सीएनएस से कितना डिस्टेंट साइड पर बाइट है, और कुछ सिम्टम बाइट से होते हैं और कुछ सिम्टम जो होते हैं वो जो वायरस पोर कर दिया उस उम्र में, उसके चलते. एक्चुअली 2 तरह के होते हैं रेबीज. जब किसी मरीज को, किसी व्यक्ति को या किसी एनिमल को कैनाइन एनिमल के द्वारा बाइट किया जाता है तो रेबीज होने की संभावना होती है. तो वो 2 तरह के होते हैं. एक तो होता है इंसेफेलोमेलेटिक टाइप का और दूसरा होता है पैरालिटिक टाइप का. तो 80% जो होता है ना वो इंसेफेलिटिक टाइप का होता है, जिसमें हेट्रोफोबिया आपको देखने को मिलेगा. स्ट्रॉन्ग लैरिंजियल स्पाज्म होता है जब मरीज अटेम्प्ट करेगा पानी पीने का. डिलीरियम होता है, बहुत एक्जेगरेशन होता है उसके शरीर में. और दूसरा एक पैरालिटिक टाइप का होता है जो गुलेन-बारे सिंड्रोम से सिमुलेट करता है. यस सर. तो केसेस तो बहुत सारे देखे हैं हम रेबीज के. और सर ये जो अभी इनोवेशन कैडिला का है एंड यूजुअली व्हेन आई स्टार्टेड द प्रेजेंटेशन एंड
at the beginning of the talk, I also inform you, Cadila is in line to Government of India initiative to eradicate rabies by 2030. और उसी का एक इनिशिएटिव है सर, नोवल 3 डोज एंटी रैबीज वैक्सीन थ्रैबिस. सो कंप्लायंस आप कितना समझते हैं सर कि 5 डोज में और 3 डोज में, जो आपने भी स्लाइड में भी, वी हैव सीन द स्लाइड वेयर यू हैव मेंशन कि एज द डोजेस इंक्रीजेस द नॉन कंप्लायंस रेट आल्सो इंक्रीजेस. सो हाउ मच यू आर अलाइन्ड टू दैट सर? In my point of view, I felt that compliance is the main thing. Yes sir. As far as rabies is concerned, because patient has to come. Suppose a patient is far beyond the central government hospital. Suppose I am residing at Araria. There is a government hospital, Sadar Hospital, Araria. Suppose a patient who was being bite by dog and his residence is 50 kilometers away from the headquarters. He has to come 5 times to complete the vaccination course if earlier vaccine is to be considered. But in therapies, he or she should come 3 times only, and it will take only a week. तो मेरे ख्याल से कंप्लायंस बहुत मैटर करता है सर. कंप्लायंस से बड़ा और कुछ इसमें मैटर नहीं करता है. वैक्सीन तो कोई भी जो अब तक जो मार्केट में मिल रहे थे, जो भी ह्यूमन सोर्स से डिराइव किया गया है, सारे वैक्सीन अच्छे हैं. पहले का छोड़ दीजिए आप, भले वो रेजिमेन 5 डोज में है, लेकिन वैक्सीन की क्वालिटी अच्छी है, वो इम्यूनोजेनिसिटी उसकी अच्छी है, सेफ्टी प्रोफाइल अच्छी है, वो अच्छा खासा करता है. बट मेन थिंग जो कंसर्न है वो कंप्लायंस का है. जी सर. बार ट्रेवल करना होगा, वो भी 1 महीने के दौरान, और उसी व्यक्ति को 3 बार ही ट्रेवल करना होगा, वो भी 1 सप्ताह के अंदर. तो बहुत मैटर करता है सर. बिल्कुल. तो मेरे ख्याल से मैं कैडिला को दिल से बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ और उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम इंडियंस ही नहीं, ग्लोबली हम लोगों के लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव कैडिला के द्वारा लिया गया, जो हमारे सोसाइटी के लिए मील का पत्थर साबित होगा. Thank you so much sir for recognizing our this novel cause. And yes sir, ये चीज 100% है कि Cadila is like, if you talk about today's webinar also sir, is very informative. Almost मैं देख रहा हूँ टाइम 41 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं, and there are still questions. और आज सर अभी हमने 4 to 5 o'clock में ऑलमोस्ट 32-35 वेबिनार्स हमने अभी क्लोज किए. में सर हमारा पूरा ईस्ट था, जिसमें पूरा बिहार, रांची, देन झारखंड साइड भी हमने पूरा कवर किया. अपार्ट फ्रॉम ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर किया है. साउथ हमने पूरा आज कवर किया सर, विद ऑलमोस्ट 35 to 40 स्पीकर्स. एंड सेम थिंग लास्ट वीक हमने कवर किया था नॉर्थ और वेस्ट. तो नॉर्थ में इंटायर नॉर्थ जोन एंड वेस्ट जोन. तो एक इनिशिएटिव है सर, और ये कंटिन्यू रहेगा फॉर नेक्स्ट मंथ ऑन ऑल्सो. सो वी नीड सपोर्ट फ्रॉम डॉक्टर्स लाइक यू, those who have great knowledge about rabies vaccines and the prophylaxis part. तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे इंटरेक्शन करके. We are ready to wholeheartedly support and relentlessly support Cadila to enhance these types of innovation for the society. Thank you. Thank you sir. Thank you so much. And thank you so much Mr. Shivanand Pandey for all your efforts. And if we talk about current participation, sir, from my side sir, from the bottom of heart, lot of thanks for supporting Sudarshan sir as well all participants and chairperson. Little bit थोड़ा सा लेट हुआ नसीम सर को आने में, लेकिन एटलीस्ट वो और थे कि अंत वाला तो सब वाला नसीम सर भी आ गए. No, that is fine. That is अच्छा fine. लगा सबका सर, आप लोगों ने कीमती समय दिया. नहीं, अच्छा कीमती समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद. और रेबीज सर एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, वर्ल्ड फर्स्ट एंटी रेबीज वैक्सीन है 3 डोज का सर. और उम्मीद रखें, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमको सपोर्ट मिलेगा आप लोगों से, और हम इंडिया नंबर 1 बढ़िया चीज है, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे. थैंक यू.
Thank you so much, sir. And definitely next Thank you, month sir. also Thank you, we'll sir. come back to Thanks, you, sir. Sudarshan, sir. And Okay. we'd like to have your time for just this kind of awareness program. Thank you so much. Okay. Okay. Thank you. Okay. Okay. And thank you all the participants who have joined. Sir, 90 plus हो चुका है participation number. So thank you so much, everyone. Bye. Thank you, sir. Technical support, you can now switch follow up this meeting. Thank you so much for your help. Thank you. चलिए हो गया, डिस्कनेक्ट कर दिया।